फिर फ़िलहाल हम लोग 3:30 बजे कांगड़ा पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में हम लोग निकलेंगे सनराइज़ देखने नदी पे। So guys, if you come to Himachal Pradesh, then in rainy seasons, then you will definitely find these kind of waterfalls. These are very small waterfalls, but very beautiful. So guys, we came to a very interesting place in Kangra. This is a Kangra bridge, which is constructed in 1949 to communicate that Kangra station to the Kangra temple. Fort right now, and legend says that the fort was built after Mahabharata. So we are going inside and checking out the place, how it is. Till now it's look very great for us. We find a couple of clicks over here, so hope you enjoy. Guys, we have reached to Dharmkot, and from here you get two roads. One road is below there, and the second is the track. You can go via vehicle from that road, but if you want a kind of a jungle walk, then you should try this path. And this path will lead you from a dense forest, which is very beautiful, because I know that because I already trekked from there. So we'll be going by that way. So guys, this is the way which leads to Triund, and you can see that it is very amazing place to be here, and I hope that you will like the video and the scenery also. Guys, हम लोग अभी काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद यहाँ पे त्रिउंड में पहुँच चुके हैं। त्रिउंड में आपने जैसे देखा रास्ते में हमें काफ़ी बारिश पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, तो उसकी वजह से हम काफ़ी लेट भी हो गए, टाइम भी मिला नहीं पूरा प्रॉपर। लेकिन ट्रैक काफ़ी अच्छा था यार, बढ़िया था, कई जगह अच्छी चीज़ें थी, देखने में मज़ा आया। बारिश होने के बावजूद भी मतलब काफ़ी हमें इंटरेस्टिंग लगा। दैट इज़ ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। आप तो नीचे से आए तो कोई बाइक की तैयारी करके आए, या ये मुझे लगता है काफ़ी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इसमें। मैं काफ़ी भीगा हूँ, कोई टाइम भीगा हूँ। और कोशिश करो कि नीचे से आप एक टेंट वगैरह बुक करके आओ या कोई गाइड लेकर के आओ, क्योंकि हमें यहाँ पे कोई टेंट नहीं मिला। 1 घंटा सर्च करने के बाद हम काफ़ी नीचे तक यहाँ पे आए और फाइनली हमें एक छोटा सा डोम टाइप का जो
छोटी सी एक शॉप है वो हमें मिली है और यहाँ पे हमें मतलब थोड़ा कोजी सा है और काफ़ी अच्छा है। Morning guys, we are in Triund and today is our nation's 70th Independence Day and we are celebrating in Triund and we are from Delhi, so Delhi Heights have a tradition to flying the kite, so we will flying the kite here also and the wind is also good, so good. गाइस कल हम लोग इस तरफ से आए थे, ये आपका गलू टेम्पल की तरफ से त्रिउंड, और आज हम इधर से जा रहे हैं और ये हमें सीधे सीधे भगसू नाग वाटरफॉल निकालेगा। और जैसा कि हमारे दुकान वाले अंकल ने बोला कि ये जो है आपका शॉर्टकट पड़ेगा, तो हम यहाँ से आ रहे हैं। तो अब हम लोग एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ हुआ है, हम लोग रास्ता भटक गए हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग है, हमें कुछ दिख नहीं रहा है। हम पिछले 15 मिनट से यही खड़े हैं और अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। थोड़ा सा फॉग क्लियर हो तो हम इधर उधर देखें ज़रा। बहुत देर घूमने के बाद 15 मिनट का वेट करने के बाद थोड़ी सी लाइट आई है और फॉग क्लियर हुआ है। वो देखो हमें छोटा सा एक डोम दिख रहा है, अभी हम वहीं जा रहे हैं, बस हो सकता है कुछ। फाइनली हम लोग एक बड़े ट्रैक के बाद भगसू नाग वाटरफॉल आ चुके हैं और हम यहाँ से सीधा धर्मशाला निकलेंगे जहाँ पे हमें बस